Hello dear students, welcome you all to this lecture video. In this video, we have discussed about the important most topic of zoology of your first year, that is the tissue, and the parts of the tissue, the second part, that is the connective tissue. Okay. In our previous classes, we have discussed some parts of the tissues or the classification of tissues like epithelial tissue, and now in this video the second part of the tissue or the second classification of the tissue, that is the connective tissue, we have discussed. This is your introduction about the connective tissue. Okay, the word connective, connection or the connective, connection or connective माने कौन बुझाए जेकोसी दुईटी पार्ट को दुईटी ऑब्जेक्ट को बा जेकोसी दुईटी पार्ट को जदि जने कनेक्ट करूछि अटैच करूछि ताको हमें कनेक्शन बोली कहूचे और कनेक्टिव बोली कहूचे बा गोटे एंड रु आउट एंड को जे अटैच करूछि तो जेहेतु एई जो टाइप रो टिश्यूडा हमरो होल आउट आवर बॉडी थ्रू आउट आवर बॉडी ये कोन करछि हमको कनेक्ट करी रखिबारे सहाय्य करछि सेथि पय बोली कि एटाको हमें कनेक्टिव टिश्यू बोली कहू. So let's start the connective tissue. What is connective tissue and what are the classification of connective tissue we have discussed in this video. Okay. So what is connective tissue? Tissue माने कौन कहले हमें? It is the combination of similar cells. ये जो combination of similar cells and they can do the similar functions is known as tissue. ये जो tissue रो next part आसला हमारा कौन? The second part is the connective tissue. And this is the most important one also. तो देखो कौन कहला पिले these are the binding. देखो फर्स्ट रो आसला एई जाको हला बाइंडिंग. बाइंडिंग माने कौन? बांधी रखिबारे सहाय्य करे. बाइंडिंग माने जे कि शरीर को बांधी रखिबार माने कौन? दौड़े बांधे से निजो को निजे बा सेई जो सेल्स मानो को धरी रखिबारे बांधी रखिबारे माने अटैच करी रखिबारे सहाय्य करे. these are the binding and supporting. what do you mean by supporting? सपोर्टिंग जस्ट एग्जांपल मो दोछि देखो पिले वर्तमान हमर कोन चलछि फेस्टिव सेशन चलछि जोडा कि हमर दुर्गा पूजा कमिंग आछि. एई जो दुर्गा पूजा कला बा दुर्गा मूर्ति जेतोल तयारी कला तमे थरे भाबो आमे कोन खाली माटी रे कोन सेटा तयारी कर दोछे ता आगुर कोन करा जाय किछि नडा बा पाळ जोडा करतो नडा बा पाळ देई ताको हम प्रॉपर गोटे स्ट्रक्चर दोछि को डेफिनेट स्ट्रक्चर दोछे ता ऊपर जाय कि हमें तार कोन करछे माटी ता हमें दोछे बा ता ऊपर पेंटिंग्स करछे जा किछि ता परे करछे. तो जदि हमर से जो पाळ बा नडाटा जदि हमें प्रॉपर देई न थांते ताहले कोन से मूर्तिटा से भले कंस्ट्रक्ट हेई थांता कि भाव थरे जदि आम देहरे किछि सपोर्टिंग सेल्स न थांता बा सपोर्टिंग टिश्यू न थांता तो हमर डेफिनेट स्ट्रक्चर भले हेई थांता कि तो हमर सपोर्टिंग सेल बा सपोर्टिंग टिश्यू कोन जिमिति से जो मूर्ति रो मु एग्जांपल देली सेथरे जिमिति से जो नडाटा जिमिति गला से भले आम देहरे कोन रहिला हाड़ रहिला बोन्स रहिला कार्टिलेज रहिला जोटा थिबा द्वारा स्केलेटल स्ट्रक्चर थिबा द्वारा बा स्केलेटल थिबा द्वारा आम देहर जो मसल्स जाको सेकु बाइंड हे कि अटैच हे कि रहि अछंती. जदि न थांदा भाबो हमर स्ट्रक्चर कोन हे थांदा हमर गोटे डेफिनेट स्ट्रक्चर न थांदा सब जाक मसल्स गोटे हे जाय थांदे मूवमेंट हे पान न थांदा बहुत डिफिकल्टी हे थांदा. तो एई जा कोन करछि हम बाइंड करिवार सपोर्ट करछि हम कोन करछि प्रोटेक्शन करिवार सपोर्ट करछि. जस्ट एग्जांपल प्रोटेक्शन और हेवी मटेरियल्स जाक हम उठेबारे मध्ये सहाय्य करछि जेहेतु हमर कोन अछि हम देहरे कार्टिलेज एंड बोन्स रहि अछि. तो कार्टिलेज एंड बोन्स कार पार्ट कनेक्टिव टिश्यू रो पार्ट हाँ ना नहीं. तो सेथि पे बोली एटा कोन कहला इट इज आल्सो गिव सपोर्टिंग टू आवर बॉडी सपोर्ट करिवारे मध्ये सहाय्य करूछि. एबे मु छिडा होई अछि बा बसिछि छिडा हिछि माने स्ट्रेट छिडा हिछि तो एई जदी मोर स्पाइनल कॉर्ड न थांदा कोन मु स्ट्रेटली छिडा हिकि रहि पार थांदी कि गोटे जिंस भाब. तो एई सोजा कोन गुटे हम बॉडी को सपोर्ट करिवारे मध्ये सहाय्य करूछि. तो कोन कहला व्हाट इज कनेक्टिव टिश्यू? दीज आर द बाइंडिंग बांधी रखुछि संग माने कोन जे जोगो करिवार सहाय्य करछि बाइंडिंग एंड सपोर्टिंग टिश्यूज हैविंग द फॉलोइंग फीचर्स. व्हाट इज कनेक्टिव टिश्यू बोली जदी व्हाट इज कनेक्टिव टिश्यू बोली पताले दिस इज द सिंपल डेफिनेशन ऑफ कनेक्टिव टिश्यू. इट इज ए वन टाइप ऑफ टिश्यू which can helpful for the binding and supporting to the organisms. Okay, this is the definition of tissue. Next asla what are the features? ei jo connective tissue ro
कौन फीचर्स रही अछि कौन फीचर्स रही अछि इट कनेक्ट अदर टिश्यू एंड ऑर्गन्स ये कौन करुछि हम देह रे थिबा आउ किछि अदर टिश्यू मानक काली हम लास्ट वीडियो रे हम पढिथिले कौन पढिथिले जेतले कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यू पढ़थिले स्ट्रैटिफाइड कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यू ट्रांजिशनल पढ़िथिले ई जो ट्रांजिशन तळे बेसमेंट मेम्ब्रेन नथिला बेसमेंट मेम्ब्रेन तळे कोन थिला तमर कनेक्टिव टिश्यू थिला तो ये कोन कला तो हमर एपिथेलियल टिश्यू को बाइंड कर रखियार सहाय्य कला बुझी पाछो तो ये कोन करछि हमर जो कनेक्टिव टिश्यू द कनेक्टिव टिश्यू कैन कनेक्ट all parts of our body and it also connect different organs of our body and it also connect different tissues in our body तो ये कौन कहला इट कनेक्ट्स अदर टिश्यूज एंड ऑर्गन्स आम देहर थिबा समस्त प्रकार ऑर्गन मानकू कनेक्ट रखिबारे सहाय्य करे इट कैन कनेक्ट्स अदर टिश्यू एंड ऑर्गन्स इनसाइड द बॉडी आम देह भितर थिबा विभिन्न प्रकार ऑर्गन्स मानकू विभिन्न प्रकार टिश्यू मानकू ये बांधी रखिबारे सहाय्य करे ओके नेक्स्ट द सेल्स आर फ्यू एई जो सेल्स माने बहुत कम अछंती एज कंपेयर्ड टू अदर टिश्यू लाइक एपिथेलियल टिश्यू मस्कुलर टिश्यू ओके मस्कुलर टिश्यू एपिथेलियल टिश्यू एई मानक अपेक्षा ता अर्थ न जे very few नंबर माने 1 or 2 सेल्स अछंती सेई जो एपिथेलियल टिश्यू बा मस्कुलर टिश्यू जेते अमाउंट रो अछि माने जेते क्वांटिटी रो अछि ता अपेक्षा माने कोन अछंती लेस नंबर अछंती ओके तो ये कौन कहला द सेल्स आर फ्यू इन नंबर एंड स्कैटर्ड माने कौन पिले उड़िया रे हमें विच्छुरित बोली कहिबा विच्छुरित एग्जैक्ट वर्ड हला हमर विच्छुरित माने कोन एपटो सेपटो गोटे पार्टिकुलर स्पेस नथो एठी गोटे सेठी गोटे स्कैटर्ड हेकी रही अछि ओके लाइक डस्ट पार्टिकल जगह जेतो कि ए रीजन स्कैटर्ड हेकी रही थाउ मन इच्छा मूवमेंट को थाउचंदी तो से भले माने कोन अछन दीस सेल्स आर फ्यू इन नंबर कम नंबर रछंती एंड विच्छुरित बा स्कैटर्ड हेकी रहिछंती द सेल्स आर इन फ्यू इन नंबर एंड स्कैटर्ड हैविंग लार्ज इंटरसेलुलर स्पेस देखो एई जो जिंसटा एई जो कनेक्टिव टिश्यू मानकर जेहेतु सेल्स आर फ्यू इन नंबर कम नंबर रछंती एवं स्कैटर्ड विच्छुरित होई रही अछंती बहुत तो सेथि पय बोली मनकर लेट्स थिंक अबाउट दिस इज द वन टाइप ऑफ टिश्यू भाबो एटा गोटे टिश्यू एंड this is another type of tissue the space between this tissue and that tissue that is the tissue A and the tissue B the gap between tissue A and tissue B is more just for your example purpose I give one example is that bhabo एटा गोटे हला टिश्यू ए एटा हला टिश्यू बी और दिस इज ए वन टाइप ऑफ सेल एंड दिस इज द सेल मिसले तो टिश्यू होची हो बाबा एटा गोटे सेल तो एई जो सेल भितर हमर कोन अछन जेहेतु दीज आर प्रेजेंट इन स्कैटर्ड विच्छुरित होई गछन सेठी गोटे तो जेहेतु हम बॉडी रो विभिन्न पार्ट्स रे माने विच्छुरित होई रहिसंती द इंटरसेलुलर स्पेस व्हाट इज द इंटरसेलुलर स्पेस द स्पेस बिटवीन द टू सेल्स एई जो दीटा सेल बा दीटा टिश्यू मध्ये रे समानकर जो इंटरसेलुलर स्पेस समानर कोन अछि ह्यूज अछि जेहेतु माने स्कैटर्ड हेक रहिसंती किंतु एपिथेलियल टिश्यू कथा चिंता करो दे आर टाइटली पैक्ड टू ईच अदर से माने पूरा टाइटली बाउंडेड हेक रहिथिले सेमानकर इंटरसेलुलर स्पेस नथिला बा बहुत कम थिला बट एई जो केस रे हमर कोन होची कनेक्टिव टिश्यू रे देखो ए सब हला हमर डिफरेंस पचारियो परीक्षा रे जदी व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एपिथेलियल टिश्यू एंड कनेक्टिव टिश्यू एई सब ही लिखिवार सेथि हमर कोन अछन दे आर टाइटली पैक्ड टू ईच अदर हियर द सेल्स आर randomly or they are scattered in place the intercellular space is less in epithelial tissue but the intercellular space is more these are the main difference between epithelial tissue and connective tissue जदि पढ़ाई जाउची ता अर्थ माने तुम भाबो बहुत जिंस एथिरे कवर होची बहुत क्वेश्चंस मध्ये एथिरे एराइज हबो बुझि परछ नै बहुत बिट क्वेश्चंस आसे बहुत शॉर्ट नोट्स आसे सेति पय बोली पिला माने भलसे इंपोर्टेंटली मन माने भलसे मन देकी सुनियो हला तो देखो कोन कहला ईच एंड एवरी पॉइंट्स रो किछ ना किछ वैल्यू रही अछि तो कोन कहला it connects other tissue ये other tissue मानो कनेक्ट करछि एंड ऑर्गन्स ई जो विभिन्न प्रकार टिश्यू ऑर्गन्स मानो कनेक्ट करछि कोठी बिले इनसाइड आवर बॉडी एंड द सेल्स आर फ्यू इन नंबर ई जो कनेक्टिव टिश्यू को बहुत कम नंबर रछंती एंड दे आर स्कैटर्ड एंड दे हैव लार्ज इंटरसेलुलर स्पेस एवं सेमानक मझिरे कोन अछि बहुत गुडाए गैप रही अछि बहुत बड़ गैप रही अछि एंड जदि सी जो गैप रहिला सर ए गैप टा के फिल अप करछि कोआ हिछि द फील्ड विथ द इंटरसेलुलर स्पेस filled with
इंटरसेलुलर सब्सटेंस जो जिनसटा इंटरसेलुलर स्पेस को फिलअप करुच्ची से जिनसटा को आम कौन बोली कहते इंटरसेलुलर सब्सटेंस बोली कहते और दैट इज नोन एज मैट्रिक्स और दी प्रोटीन दैट इज द मैट्रिक्स ए जो आम रहिला सेटा को आम कौन बोली कहते मैट्रिक्स सेठी मध्ये हमर इंटरसेलुलर स्पेस एपिथेलियल टिश्यू मध्ये हमर मैट्रिक्स ही थिला एठी मध्ये द इंटरसेलुलर स्पेस which can fill the gap between the two cells or the two tissues. This is called the intercellular substance or which is otherwise known as matrix. Sir, what is matrix? ये जो matrix टा जेमिति गुटे एग्जांपल मु मध्ये देइथिल तुमको ऑलरेडी गोटे घर कला बेलक आम दुटा ब्रिक्स रखुचे ब्रिक्स मझे किसी सीमेंटिंग सब्सटेंस दोचे दैट द इंटरसेलुलर स्पेस टा फिलअप करिया पई एई जो सीमेंटिंग सब्सटेंस टा किछि हमर केमिकल्स सीमेंट तापरे हमर कोन अछि डस्ट पार्टिकल्स किछि बाली गोड़ी ए सब जगह नहीं कि पानी किछि वाटर हला ने ए सब जगह दे के हमें सीटा कोन करते गोटे सीमेंटिंग सब्सटेंस गोटे तयारी करते से भलिया एई जो सीमेंटिंग सब्सटेंस ता जोडा हमें मैट्रिक्स बोली कहूचे हम देह रे जो अछि एईटा जनरली काइन तयारी छै द मैट्रिक्स इज मेड अप फ्रॉम व्हिच मटेरियल्स तो मैट्रिक्स देखिए हमें कोन द मैट्रिक्स इज नॉन लिविंग इट इज नॉट ए लिविंग इट इज ए नॉन लिविंग composed of तैयारी हुई अच्छी कौन कहला देखो पिले आउ रिपीट करछि द मैट्रिक्स इज नॉन लिविंग एंड composed of combination of एवं तैयारी हुई अच्छी कॉम्बिनेशन कार कॉम्बिनेशन कार्बोहाइड्रेट आउट रहला प्रोटीन एई जो कार्बोहाइड्रेट आ प्रोटीन रो दुईटी सम्मिश्रण रे दुईटी रो मिश्रण रे दुईटी मिसी करी कार्बोहाइड्रेट आ प्रोटीन मिसी कोन तैयारी करछंती have the glycoproteins is जो proteins हमर कोन रहला different glycoproteins that means the derivative of the protein ए जो carbohydrate और protein रो combination कोन तयारी छै मैट्रिक्स तो कोन कहला the intercellular space is filled by a intercellular substance which is otherwise known as matrix and the matrix substance is mainly composed of the carbohydrate and the proteins so this is the basic concept about the connective tissue. The next one is the first point है second point next है basement membrane is absent. देखो this is the another difference or this is the another parts of the connective tissue. Epithelial tissue रो कौन थिला basement membrane is present थिला सी जो basement membrane ऊपर कौन होथिले different types of epithelial tissue का attach होई रहउथिले but एई जो केस रे connective tissue रे totally basement membrane nahi that means in their base of the connective tissue the basement membrane is absent एठी जमा हमर basement membrane nahi हला तो नेक्स्ट आसला हमरा फंक्शन एई जो connective tissue हम देह रे कोन काम बा कोन आवश्यकता आसे what is the function of the connective tissue the main function of the connective tissue is binds the different tissue and organs एईटा का तार जोटा फीचर्स जोटा सेटा का तार काम से कोन करछि विभिन्न प्रकार टिश्यू ऑर्गन्स मानु को बांधी रखिबार सहाय्य करछि सो एक्ट एज ए पैकिंग मटेरियल तो पैकिंग मटेरियल माने कोन कहला जेहेतु एटा कोन करछि इंटरसेलुलर स्पेस को फिल अप करूछि सेति पय बोली कि जो मैट्रिक्स सब्सटेंस द्वारा फिल अप मध्ये करूछि सेति पय बोली कि एटा कोन बोली कहछ हमें पैकिंग मटेरियल बोली मध्ये कहछ पैकिंग मटेरियल माने कोन सर गोटे एग्जांपल मु दोछि व्हेन वी कैन बाय ए टीवी और ए रेफ्रिजरेटर आमे जदि गोटे टीवी बा रेफ्रिजरेटर गोटे जदि आमे किनि के आणुचे ताहले इन द रेफ्रिजरेटर बॉक्स द रेफ्रिजरेटर इज स्मॉल बट द बॉक्स इज लार्ज area and that is filled by some air packets द्वारा fill up हितो or by any smooth substance किछि smooth substance दिया हितो काहे कि एई जोटा को हमर कोन करछि प्रोटेक्शन करिवा सहाय्य करछि से जो भीतर जो मटेरियल्स ता रहिला तमे देखिथिबो मध्ये आमे जते सब आमे जिंस बाय करछे किनुचे बा ऑनलाइन प्रोडक्ट्स जतोळे आसे ट्रांसपोर्ट जतोळे करा जाय समान मध्ये किछि एयर पैकेट्स दिया जाय किछि स्पंज दिया जाय देखिथिबो तमे स्पंज दिया जाय बा किछि हमर स्मूथनिंग सब्सटेंस बा रबर टाइप सब्सटेंस दिया जाय जोटा कोन करछि समान से जो एक करे से कोन कला पैकिंग मटेरियल हिसाब रे काम हला सेरा पैक कला टाइटली पैक हिक रहिला एवं से आम देह को प्रोटेक्ट मध्ये करिवार सहायता कला तो सेति पय बोली कोन कोचे इट बाइंड्स द डिफरेंट टिश्यू एंड ऑर्गन्स एटा हमर विभिन्न प्रकार टिश्यू एंड ऑर्गन्स मानो को बांधी रखियार सहायता करे ता सहित सो इट इज एक्ट एज ए पैकिंग मटेरियल सेति पय बोली एटा कोन बोली कोच हमें पैकिंग मटेरियल ऑफ आवर बॉडी बोली मध्ये को जाय नेक्स्ट it also store fat it is the most important thing it is also store fat
जेहेतु देख पिले जिते आम एक्सेस अमाउंट ऑफ फूड इंटेक करुचे एक्सेस अमाउंट फूड इंटेक कला बेलू से कौन हो ऑयली सब्सटेंस डाक जामर कौन हो एज ए फैट हिसाब से जेहेतु ये जो सेल सेल मध्य गैप बहुत अच्छे इंटरसेलुलर स्पेस अधिक अच्छे तो से जो गैप मध्य मैंने कौन हो जाती डिपोजिट हो जाती जोड़ा कौन कहला इट ऑल्सो स्टोर फैट द फैट तो आम कहवा अदरवाइज नोन एज adipose tissue that means inside the intercellular space between the connective tissue adipose tissue is present से जो फैट टाको आम कौन बोली कहचे adipose tissue बोली मध्य आम कहचे नेक्स्ट आसला इट फॉर्म्स ए सपोर्टिंग फ्रेमवर्क आमर किए दूची फ्रेम माने गोटे जोडे मो तुम प्रीवियसली एग्जांपल देली दुर्गा मूर्ति कथा कहली तो सीधा गोटे फास्ट टाइम कौन कले गोटे फ्रेमवर्क माने गोटे पर्टिकुलर स्ट्रक्चर देले ताम देहर जो स्केलेटल सिस्टम टा अछि ये मनुष्य को बा विभिन्न प्रकार ऑर्गेनिज्म मानन को विभिन्न प्रकार एनिमल्स मानन को से तार प्रॉपर स्ट्रक्चर टिए दूची तो सेति पय बोली कि एटा कोन बोली कहला इट फॉर्म्स ए सपोर्टिंग फ्रेमवर्क हमको जो भलिया हमर स्ट्रक्चर ता गठन होईची शरीर गठनटा जो भलिया होईची हाउ द बॉडी विल बी मेड अप ऑफ लाइक दिस इट विल बी गिव ए प्रॉपर स्ट्रक्चर टू द पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म ओके विभिन्न प्रकार पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म मानन को ये कोन करते विभिन्न प्रकार स्ट्रक्चर दबारे मध्ये सहाय्य करছে तो कोन कहला इट फॉर्म्स ए सपोर्टिंग फ्रेमवर्क दैट इज विल बी हेल्पफुल बाय द स्केलेटल स्ट्रक्चर ऑफ द स्केलेटल सिस्टम ऑफ आवर बॉडी एई जो प्रॉपर स्ट्रक्चर ता हम के दोची स्केलेटल सिस्टम ता हम देहरे दोची of the body next कोन कहला it protect the body against germs and toxins ये मध्य कोन करे हम देह को जो पैथोजेंस बोली कहआ जे पैथोजेन माने जो ऑर्गेनिज्म माने कि these are the micro organism when they will be enter in our body they can causes disease to us so these are the different type of germs and toxins and they can produce toxic substance in our body which can harmful to us and which can harmful to our tissue system and they can damage to our different type of organs so it protects the body against the germs and toxins ये कौन करे हम बॉडी को germs एवं toxin मानक ठू मध्य ये हमको प्रोटेक्ट करिवारे सहाय्य करे तो ये कौन आसला हमरा दिस इज ऑल अबाउट योर फंक्शंस ऑफ द कनेक्टिव टिश्यू this is the features of the connective tissue and these are the different functions of the connective tissue next we can start the classification of connective tissue and that in this classification we have already discussed but due to we have studied the part of the tissue that is the connective tissue so again I can repeat it that is the connective tissue the classification of tissue the connective tissue is mainly divided into three parts यही जो कनेक्टिव टिश्यू टाको आमे मेनली तीन भाग रे व्यक्त करछे कोन कोन पिले से जो तीन पार्ट सेटा रहिला हमरा कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर the main one this is the exactly called as connective tissue so that it is called as connective tissue proper next one is the skeletal tissue that can produce framework to our body that is the skeletal tissue and the third one is the most important thing that is the fluid connective tissue because they have the flow ability जेहेतु से माने हम देहर फ्लो करंती सेति पय बोली कि एटा कोन बोली कहते हमें फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू बोली कहते तो टिश्यू कनेक्टिव टिश्यू केते बार विभक्त होला तीन भाग रे कोन कोन कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर skeletal tissue and fluid connective tissue again the connective tissue proper is again subdivided into different types ei jo connective tissue proper rahila eita puni thare विभिन्न parts रही अछि like areolar connective tissue adipose connective tissue white fibrous connective tissue vello elastic ei jo white fibrous vello elastic ei सब जाकरा हमर spinal cord रे हमर विभिन्न प्रकार skull एटा skull बोली कोसे खपुरी जडा तमे ओडिया रे कहथो ए सब जाक एटा हमर तयारी होइछि एटा हमर आसीबो सेतोळ जेतोळ के हमें न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन पढ़िबा सीएनएस पढ़िबा पीएनएस पढ़िबा सेंट्रल नर्वस सिस्टम पेरिफेरल नर्वस सिस्टम सेथि आसला को एई जो विभिन्न प्रकार स्ट्रक्चर जाक आसीबो सेठी एई जाक एई वर्ड्स रो यूज होबो सेति पय पिले मु कनेक्टिव टिश्यू ईच एंड एवरी पार्ट ऑफ द टिश्यू मु तुमको पूरा ब्रीफली एक्सप्लेनेशन दोछि काहे कि हमरो आगु को एसु जाकर आवश्यक पड़ी पारे तो देखो कौन आसला कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर इट इज द अगेन सब डिवाइडेड इनटू एरियोलर टिश्यू एडिपोज टिश्यू ईच एंड एवरी टिश्यू विषय मध्ये हमें गोटे ब्रीफ डिस्कशन करिक जिबा एरियोलर टिश्यू एडिपोज टिश्यू व्हाइट फाइब्रस टिश्यू वेलो इलास्टिक टिश्यू एंड रेटिकुलर टिश्यू रेटिकुलर दीज आर द tissues which are present in our eye or the retina एटा आसीबो जेतोले कि हमें न्यूरल कंट्रोल कंडीशन रे सेंस ऑर्गन साको पडिबा सेंस ऑर्गन भितर हमर आखि उटा आछि फॉर द विजन देखिबा पई तो सेठी आछि हमर रेटिकुलर टिश्यू
तो ये सब जाके हमें भलसे देखिबा। नेक्स्ट आसला हमर कोन स्केलेटल टिश्यू। स्केलेटल टिश्यू अगेन सब डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, दैट इज द cartilage and the bone. So what is cartilage? It is slightly flexible than bone, and it is again divided into different types, and it will be again subcategorized, that is hyaline cartilage, fibrous cartilage, calcified cartilage, and elastic cartilage. Again the bone is different types of the, there are so many types of the bones, that are compact bones, spongy bone, and sesamoid bones. এই সব যাক মধ্যে আমার আসিও পরীক্ষা হেলা। তারপর the next important one is the fluid connective tissue. It will be consist of blood and lymph. What is blood? Blood is a red color fluid connective tissue, না নাই? তো এটা কোন বলি কতে ওটা red color fluid connective tissue blood. The blood is mainly composed of the plasma and the corpuscles. Plasma contains water, inorganic substance, organic substance, and the when we have study about the blood मध्ये तमर अछि सिलेबस रे जतबे कि हमें ब्लड पाखा छै तो हमें ब्लड रे डिटेल्स टाइम मध्ये पढिबा। एंड द सॉलिड पार्ट व्हिच इज नोन एज corpuscle is made up of three parts, that is the RBC, WBC, and platelets. RBC is otherwise called as erythrocytes, WBC is otherwise called as leukocytes, and platelets is otherwise called as thrombocytes. है ना, ए सुधा विषय हमें डिस्कशन करिबा। बट एई जो वीडियो रे हम तो चालछि कनेक्टिव टिश्यू गोटे गोटे पार्ट जाओ। तो फर्स्ट देखिबा हमें कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर कोन, what is the meaning of the what is the connective tissue proper. तो what is connective tissue proper मैं एठी लिखि देली कोन कहला, it obviously means that एहा बुझाए जे it obviously means that a tissue एटा हला गोटे टिश्यू which connect parts of the body together. ये कोन करछि विभिन्न पार्ट्स ऑफ द बॉडी को टुगेदर गोटे ठी अटैच करी रखिबारे सहाय्य करूछि। तो सेथि पय बोली एटा कोन बोली कहआ जाय कनेक्टिव टिश्यू proper बोली कहआ जाय। तो what is connective tissue proper? What is the definition of connective tissue proper? It is a one type of specialized tissue, or it obviously means that it the tissue which connect the parts of the body together. ये कोन करछि हमर विभिन्न parts of the body को गोटे थरे अटैच करी रखिबारे सहाय्य करूछि। Again the connective tissue is proper is divided into so many types, and in our next videos we have goes for the details about the connective tissue proper. Okay, so this is all about your introduction, different features, and what is the function and the classification of the connective tissue proper. In our next videos we have discussed each and every tissues of the connective tissue proper, and what are the functions, in which part of the body they will be find out, what is their occurrence position, we have discussed briefly. Okay, thank you students.